So very good evening, all the participants. Today, let us start with this section 52. This is the section 52. I hope my screen is visible. Is it visible? Yes. So section 52. In section 52, what are the two options available? So you have to answer. What are the two options available to a secured creditor in section 52? Either to sell themselves the secured assets or to relinquish their rights. Right. So they have got two options. Either they can opt to realize, and secondly, they can opt to relinquish the security interest. And if they opt to relinquish the security interest, then what will be the treatment of those assets? Suppose there is a secured creditor and he has opted to relinquish his security interest. Then what will be the treatment of those assets? Sir, it will form part of liquidation Yes, it estate. will form part of the liquidation estate. And what is the manner in which this option is exercised of either relinquishing or realizing the asset? What is the manner in which the secured creditor exercises his option to either relinquish or realize the asset? Is there any form? Form A, I don't remember, sir, While exactly. filing the claim form, suppose he is an operational creditor, then he will be filing form C during liquidation. Yes, the Form C for operational creditor. So in form C, there is a column number 8A. Yes, So that column 8A, in column 8A, he has to fill whether he is realizing or relinquish yes, the security interest. yes, sir, yes, sir. है Yes, ना? sir. And in form D also, there is a column. This I Yes, have sir. already told you number of times. Yes, sir, yes, sir. In previous class, you have है ना? said so, yes. In form D also, there is a column number 8A. I hope now it is visible on your screen. Is it visible? Yes, sir. So he's saying whether security interest is relinquished. I've made it a bit bold. Yes or no? So this is the manner. And suppose he doesn't fill up this column, then what will happen? Suppose he doesn't say anything. He tries to act smart and he leaves this column blank. Then what will be Then the treatment? Then it will be considered that he has relinquished his rights and the Right, property to the liquidation estate. right. Very good. So this is the first step. Now, suppose he wants to realize the security interest. Then what is the next option? What is the next option? Sir, Suppose, yes. he will inform the liquidator that what he's going to do, whether he wants to keep the asset with himself, sell it himself, or he wants to relinquish the right. No, this he has already done. This he has already done. Now, he shall inform the liquidator of such security. So, he will inform in detail what is the security interest he wants to realize and identify the asset subject to I such security interest to be realized. Yes, sir. Then identification of the particular asset and the security. Then the Yes, liquidator will verify that security interest, right? And liquidator can verify the security interest through the publicly available information. Might be some record of information utility or SARSAI or MCA, etc., etc. Right? And he can, secured creditor can enforce, realize, settle, compromise, or deal with the asset in any way which he likes. Suppose there is any resistance, then what will happen? Secured creditor wants to realize, but there is a resistance either from the management or from the workers or what. So then what will be the option available to him? he will go to the adjudicating authority. Yes. So he will file an application with the adjudicating authority. So section 52, subsection 5. And suppose the amount realized is surplus. Suppose his loan was 50 crores only and he has realized 70. Then what will happen? Sir, the balance amount
will go to the liquidation state, will go to the liquidator. Hmm. And whether, suppose, I'll give you an example. There is a secured creditor who has given a loan of 500 crore rupees, right? And the realization also is 500 crore. So can he retain the entire amount? No, sir. So what he has He to has do? liquidation cost. Right. So the amount of insolvency resolution process cost due from the secured creditor shall be deducted from the proceeds of any realization. And where the proceeds of realization are not adequate to repay the debts, suppose his loan is 500, but he could realize only 400, then what will happen to balance 100? Sir, it will go to section 53 1F, last one. 1E. Man? 1E. Ah. Yes, sir. So it will go to 53(1)(e). Now let us see 53(1)(e) also. This is 53(1)(e). 53(1)(e) has got two parts: government dues and then debts owed to secured creditor for any amount unpaid following the enforcement of security interest. Right. So this is the 53 we have already seen. Now let us go to the regulations also regarding section 52. So the regulations regarding 52 are 37, 37A, 39, 40, 21, 21A. Let us have a look at the regulations. 21 is regarding the proving the security interest. So what it says, the existence of security interest may be proved by a secured creditor on the basis of a record available in an information utility, certificate of registration of charge issued by registrar of companies, or proof of registration of charge with sursign. Right. Now presumption of security interest. So here he makes it clear, a secured creditor shall inform the liquidator of its decision to relinquish its security interest to the liquidation estate or realize its security interest as the case may be in Form C or Form D of Schedule 2. So they are specifically referring to Form C or Form D, provided that where a secured creditor does not intimate its decision within 30 days, then the assets covered shall be presumed to be part of the liquidation estate. Right. Now, where a secured creditor proceeds to realize its security interest. Now, suppose he has decided that okay, he will realize also. So he shall pay as much towards the amount payable under clause A and subclause 1 of clause B. Right? So let us note down these clauses, clause A and subclause 1 of clause B. So let us do a calculation of this also, as it would have shared in case it had relinquished the security interest to the liquidator within 90 days from the liquidation commencement date. Okay. Now let us open an Excel sheet and see how this calculation works. ये calculation होगा कैसे? Now suppose the secured loan is 100. Just a minute. Let me share my screen also with you. Suppose secured loan is 100, right? I hope now my screen is visible. And suppose the insolvency resolution cost is say 20. And this is the only secured asset, right? Wages for 24 months.
are 20. Right? Realization is 100. Right? Let us take different realizations. 100, second is 40, third is 20. Right? So now you have to calculate how much is available for the secured creditor. In the first situation, please calculate how much is available to the secured creditor. Can you do the calculation? These are the figures. MVS Kumar ji, any It will idea be, how it will be yeah, done? 100 minus 20, or whatever Very good. realization Very good. minus So, this. so we will say amount realized is 100. So first of all, insolvency resolution process cost is to be paid. Correct. Right? Suppose this is the only asset, right? So then the entire 20 has to be paid. So now the amount available is 80. 80. Now out of 80, how much will be paid to the secured creditor? Whether entire 80 he can take? No, in proportionate to the. Right. Very good. So out of this 80 also, the amount available to the secured creditor, amount available for secured creditor will be out of this 80 only, right? So it will be plus 80 divided by Divided by 120 into 100. Divided by 120. 120 into 100. yes, 100 is the. So this will be the amount available for secured credit. And similarly, the amount available for workers, it will be 20 divided by 80 into No. So the amount available is 80, right? So this will be 80 divided by 120 into 120 into into 20. This will be the amount. So if we add these two, it will come to 80. This is the calculation. Now suppose only 40 is realized. Then how the calculation will go? Amount realized is only 40. So first of all, 20 will be deducted. Right? Balance 20. Now balance will be 20. And out of this 20, the calculation will be 20 divided by 20 divided by 120 into 40. 20 divided by 120 into 100. 40. 100. It is 100. Yes. 100 over. Yes, 100. Correct. So this much will be the available. और इनको कितना मिल जाएगा? 20 is the total amount to be distributed. Loan is 120 into 20. So you will get 3 points. So this is the calculation. Now suppose the entire amount realization is 20 only. Then what will happen? 0. Yes. So nobody will get anything. Amount available is 0. So he will get 0 and he will get 0. This is the. Sir, please explain it once again, sir. अभी बता दे.
distribution of realization by secured creditor. देखिए, बताइए एमएस कुमार जी, आप एक्सप्लेन कीजिए. Yeah. हम्म. See, the secured loans total is 100. हम्म. Okay. But actually realization also we took first assumption is 100. हम्म. So now the question is how much is to be distributed. हम्म. So out of anything what we realized, first we should deduct the insolvency cost. हम्म. So after deducting insolvency cost, in first scenario, we have the enough cash of only 80. हम्म. So that 80 we have distributed in proportionate to the between secured loan and wages Wages for for 24 months. so the 100 plus 20 we have to add because this is the two items which we are going to distribute. So there is a crux actually. So 100 divided by 120 is one number, another number 20 by 120. Thereby you will get. That's all. 80 gets distributed in that ratio. Same approach to be followed for 40-20 scenarios also. By deducting the common insolvency cost is common in all the scenarios. Has to be deducted. क्लियर है काजल जी? Yes, sir. सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है. बाकी मैं ये शेयर कर दूंगा आपसे, Yes, sir. Yes, sir. है ना? हाँ, चलिए. सो व्हाट इज रिटर्न वेयर ए सिक्योर्ड क्रेडिटर, यही है. तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. वेयर ए सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक बार पढ़ लीजिए काजल जी, पढ़िए आप जरा पॉइंट नंबर 2. वेयर ए सिक्योर्ड क्रेडिटर. Yes, sir. Where a secured creditor proceeds to realize its security interest, it shall pay as much towards the amount payable under clause A and subclause हाँ, 1 of नाउ क्लॉज ए. व्हाट इज क्लॉज ए? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट. यही क्लॉज ए है ना? तो क्लॉज ए क्या है 53 का? यही है ना? यस, पढ़िए पढ़िए. and clause 1 of clause B of subsection 1 of section 53 as it would have shared in case it And had now what is the relinquished. sub clause 1 of clause B? Wages paid plus the amount paid to secured creditor in case they have relinquished their security interest. है ना? यही है ना? To the liquidator within 90 days from the liquidation commencement date. Right. Excess of the realized value of the asset which is subject to security interest over the amount of his claims admitted to the liquidator within 180 days from the liquidation commencement date, provided that where the amount payable under this sub-regulation is not certain by the date the amount is payable under this sub-regulation, the secured creditor shall pay the amount as estimated by the liquidator. Provided further that any difference between the amount payable under this sub-regulation and the amount paid under the first proviso shall be made good by the secured creditor or the liquidator as the case may be, as soon as the amount amount payable under this sub-regulation is certain and so informed by the liquidator. Where a secured creditor fails to comply with sub-regulation to the asset which is subject to security interest shall become part of the liquidation estate. Explanation. It is hereby clarified that the requirements of this regulation shall apply to the liquidation process commencing on or after the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India Liquidation Process Amendment Regulations 2019. So it says if the secured creditor fails to comply with sub-regulation 2. Sub-regulation 2 means this, whatever is written here. So then it shall presumed to be part of the liquidation estate. Now let us see regulation number 37. 37A also. Regulation number 37. What it says? This is regulation number 37. 37 talks of the realization of security interest. Right? A secured creditor who seeks to realize its security interest under section 52 shall intimate the liquidator of the price at which he proposes to realize its securities. भाई प्राइस भी तो बताना पड़ेगा ना, because why? The liquidator may be having a better buyer. Now it is the ball is in the court of the liquidator. So the liquidator shall inform the secured creditor
within 21 days of receipt of the intimation under sub-regulation 1, if a person is willing to buy the secured asset before the expiry of 30 days from the date of intimation under sub-regulation 1 at a price higher than the price intimated under sub-regulation 1. But there should be a ready buyer, because the person should be willing to buy the secured asset before the expiry of 30 days from the date of intimation. That means he is a ready buyer, right? Suppose the secured creditor says that, okay, my loan is 100, my security value is 100, but I think the realizable value, I will be able to realize only 80, right? So now if the liquidator feels that there could be a better buyer, so the liquidator will say that, okay, I have got a buyer who is willing to buy the asset before the expiry of 30 days from the date of intimation at 90, right? Now there could be two situations. Number one, there was a buyer, but he did not turn up. Second is, there was no buyer at all. Then what will happen is given in the later part of the regulation. Now suppose the liquidator says that, okay, I have got a buyer at 90. So in that situation, where the liquidator informs the secured creditor of a person willing to buy the secured asset under sub-regulation 2, the secured creditor shall sell the asset to such person, right? So if the liquidator says that I have got a buyer of 90, so then the secured creditor shall sell the asset to such person, right? Because his ultimate aim to is to realize. He is not concerned with who is buying and who is not buying. Now another question here, whether this asset can be sold to a person who is not eligible under 29A? No, sir. No. So here also there is a bar. So point number 8 says a secured creditor shall not sell or transfer an asset which is subject to security interest to any person who is not eligible under the code to submit a resolution plan for insolvency resolution of the corporate debtor, right? Now point number 4. If the liquidator does not inform the secured creditor in accordance Just with the... Yes, please. Just one question. Yes, yes. Normally in the valuation, we used to have a Swiss rule method. I mean, suppose the security creditor will give a second chance to reduce the price and can accept something. Is it allowed here also like that? No. Normally, the process of auction is allowed. So normally, Okay. these assets are sold through public auctions Okay. in order Okay. to maintain transparency. Mhm. And suppose the secured creditor is managing the auction, because suppose the secured creditor says that, okay, I want to realize, so then he will put it up for sale through public advertisement, and the liquidator can also take part in that auction. That means he can participate. He can see that the process is duly followed. Mm. No, my question is first, liquidator is telling, yeah, this is the price which I found the buyer. Then the Right? security creditor is telling that no, I will also come down my price and I would like to buy it. Something So like that then is telling. let him buy then, Mm. because he has Okay. already intimated that, okay, he wants to realize. Suppose initially the secured creditor said that, okay, I'll be able to sell it at 80. Liquidator says 90. Now secured creditor says 95. Then okay. Mm. Okay, that's what I'm Huh? saying. Okay. This is your question. Correct. Yes, Ah, correct. ah. So if the liquidator does not inform the secured creditor in accordance with sub-regulation 2, or the person does not buy the secured asset, right? So secured creditor said 80, liquidator did not say anything. Or liquidator said 90, but that the buyer did not turn up, or he did not buy. Then the secured creditor may realize the secured asset in the manner it deems fit, but at least at the price intimated under sub-regulation 1. So because the secured creditor earlier said 80, now he cannot go below 80. This is the point. Secured creditor said that, okay, I have got a buyer at 80, right? Liquidator said 90, but that buyer did not turn up. Now, the secured creditor is at an option to sell this asset. But what is the minimum at which he is required to sell? 80 only. Suppose ultimately he realizes 70, so then also 80 will be deducted from the loan amount. This is the meaning, right?
where the secured asset is realized under sub-regulation 3. So now there are two parts where the secured asset is realized through the buyer identified by the liquidator. Then the secured creditor shall bear the cost of identification. Right? And if the secured asset is realized through a buyer, to the buyer, which is identified by the secured creditor, then the liquidator shall bear the cost. This is the meaning. So the person to whom the asset is being sold or through whom the asset is being sold, the other party will bear the cost. This is the meaning. Cost of identification means what? Cost of identification could be cost of public advertisement, cost of preparing a marketing strategy, and so on. Right? The provisions of this regulation shall not apply if the secured creditor enforces his security interest under SURFACE or RDB. So it says provisions of this regulation shall not apply. That means all these provisions, these will not apply if the enforcement of security interest is done in case of SURFACE or RDB. So then he has not to share all these things. Because secured, the SURFACE Act also specifies the procedure in detail, in what manner the asset is to be sold and all. So if the secured creditor is enforcing his security interest under SURFACE Act or RDB Act, then these provisions of this regulation will not apply. Now another question will crop up in your mind, whether there is any other mode of enforcement of security interest also apart from SURFACE. SURFACE के अलावा भी कोई मोड हो सकता है क्या? Because it's a secured asset. Any answers? आप तो काजल जी प्रैक्टिस करती हैं आरडीबी की, डीआरटी की. Yes, sir. तो और क्या हो सकता है? ये कह रहा है कि जी अगर आप सरफेसी में एनफोर्स करोगे या आरडीबी में एनफोर्स करोगे तो ये रेगुलेशन नहीं लगेंगे. मेरा क्वेश्चन ये है कि यू आर ए सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो सरफेसी या आरडीबी के अलावा भी व्हाट इज द अदर मोड्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट? दिस इज माय क्वेश्चन. एमवीएस कुमार जी, एनी आइडिया? No, nothing. देखो भाई, सरफेसी में भी क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि द लोन मस्ट बी टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यहां जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है ये तो कोई भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं ना बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही हो. इफ इट इज नॉट अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन यू विल नॉट बी एबल टू एनफोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सरफेसी. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, वहां पर मिनिमम लिमिट है 20 लाख का आरडीबी में आने के लिए, है ना. यहां पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है उसका 10 लाख का ही लोन हो तो भी नहीं आएगा. तो if the loan is not to a bank or financial institution, or if the loan is less than the amount which is enforceable under SURFACE, then ये वाला will not apply. ठीक है. A secured creditor shall not sell or transfer an asset which is subject to security interest to any person who is not eligible. 29A में eligible नहीं है तो is not. Assignment of not readily realizable assets, NRR. ये क्या होते हैं NRR? Suppose sundry debtors are there, amounts receivable are there, बहुत सारे assets होते हैं ना, अब वो रियलाइज हो ही नहीं पा रहे, तो लिक्विडेटर क्या करेगा? A liquidator may assign or transfer a not readily realizable asset through a transparent process. Normally, what is the practical situation in such cases? These are assigned to asset management companies. ARCs इनको ले लेती हैं at much lower value. Suppose 100 crores के हैं, वो कहेंगे जी हम 10 crores दे देंगे, 5 crores दे देंगे, not readily realizable assets का, बाकी हम अपने हिसाब से देखते रहेंगे. ठीक है. So a liquidator may assign or transfer a not readily realizable asset through a transparent process in consultation with stakeholders consultation committee in accordance with regulation 31A for a consideration to any person who is eligible to submit a resolution plan for insolvency resolution. ठीक है. And for the purpose of this sub-regulation, not readily realizable asset means any asset included in the liquidation estate
which could not be sold through available options and includes contingent or disputed assets and assets underlying proceedings for PUFE transactions. ठीक है, तो ये वाले जो assets हैं जिसमें PUFE transactions की proceeding चल रही हैं या फिर contingent assets है या disputed assets है, तो इनको बेच देते अगर दूसरी ऑप्शंस में दिस कैन नॉट बी सोल्ड. ठीक है. नाउ 38 टॉक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट्स. एक बार इससे पहले हम 39-40 देख लेते हैं. 39 क्या है? 39 रिकवरीज ऑफ मनी, 40 है लिक्विडेटर टू रियलाइज. अच्छा, ये हो गया 53. अब हम चलते हैं सेक्शन 54 पर. पहले 53 हमने कल देख लिया था लास्ट क्लास में. नाउ लेट अस गो टू 54. 54 क्या बोलता है? डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. अब यहां देखिए दो तरीके हैं. बिकॉज इन CIRP वी नो दैट द कंपनी कुड बी सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न ऑल्सो. तो अगर इफ इट इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न तो फिर तो डिसोल्यूशन नहीं होगा. लिक्विडेशन में भी, लिक्विडेशन ऑल्सो द कंपनी में भी सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न, है ना. 32 हमने पढ़ा ना, रेगुलेशन 32 E और F. Where the assets of the corporate debtor have been completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjudicating authority for the dissolution of such corporate debtor. ठीक है. The adjudicating authority shall, on application filed by the liquidator under sub-regulation 1, order that the corporate debtor shall be dissolved from the date of that order, and the corporate debtor shall be dissolved accordingly. ठीक है. And a copy of an order shall within 7 days from the date of such order be forwarded to the authority with which the corporate debtor is registered. अब हमें पढ़ना है रेगुलेशन 45 और रेगुलेशन 46, क्योंकि यहां पर वो क्लोजर की बात नहीं करता. यहां क्या बात कर रहा है? डिसोल्यूशन. लिक्विडेशन हो गया तो डिसोल्यूशन. क्या ऐसा हो सकता है कि लिक्विडेशन हो गया लेकिन डिसोल्यूशन नहीं हो? इज देयर एनी सिचुएशन वेयर लिक्विडेशन इज डन, assets have been liquidated but there is no dissolution? हो सकता है क्या? ये रेगुलेशन 45 इसकी बात करता है. 45 और 45 ये 45 में क्या बोलता है? फाइनल रिपोर्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन. When the corporate debtor is liquidated, the liquidator shall make an account of the liquidation, showing how it has been conducted and how the corporate debtor's assets have been liquidated. If the liquidation cost exceeds the estimated liquidation cost provided in the preliminary report, the liquidator shall explain the reasons for the same. ठीक है. And the liquidator shall submit an application along with the final report and the compliance certificate in Form H. तो Form H में पूरा डिटेल जाता है. ये Form H है. फॉर्म एच के अंदर पूरा डिटेल जाता है. क्या होता है फॉर्म एच? एक ये है फॉर्म एच. ये फॉर्म एच नजर आ रहा होगा आपको. कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ये पूरी डिटेल इसके बारे में चली जाती है. ये इनिशिएशन कब हुआ, लिक्विडेशन कब स्टार्ट हुआ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कब कैसे हुआ, सारी चीजें ये पूरी की पूरी डिटेल इसके अंदर जाती है. ठीक है. ये पूरा डिटेल है, ये सारा फॉर्म एच है. ठीक. अच्छा, अब हम रेगुलेशन 45 देख रहे थे. एक बार रेगुलेशन 45 देख लेते हैं. तो रेगुलेशन 45 ये फाइनल रिपोर्ट था यहाँ ये पॉइंट. सेकंड है ये क्लोजर ऑफ द
लिक्विडेशन प्रोसेस। तो यहां से ये सिचुएशन है जो मैं बता रहा था, क्लोजर ऑफ, इसमें डिसोल्यूशन नहीं होगा, क्लोजर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर वेयर द कॉर्पोरेट डेटर इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है, और ए कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हैज बीन सैंक्शनड अंडर सेक्शन 230, और फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन केसेस नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज ए, ठीक है, या तो डिसोल्यूशन होगा या क्लोजर होगा ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक। This reconstruction also will come under dissolution, or how it is? No. In case of compromise or arrangement, the company will continue to exist and there will be closure of the liquidation process. So, suppose there could be three fallouts of the liquidation. Number one, all the assets have been sold, liquidated, and the company is closed, right? So, in that case, there will be dissolution. Second scenario, there is a possibility of compromise or arrangement. So, then also the company will go on. Third is when it is sold as a going concern, then also it will continue. So, there are two situations in which it will continue. Where the corporate debtor is sold as a going concern, because the management will change. In this case, when the corporate debtor is sold as a going concern, the management will change, but the company will continue to exist. Yes, please. No, there is a winding up process is there in the company law. So the moment liquidation happens, then the company closure, it has to happen through the winding up process, right? Which is nothing winding but up provisions, there is no concept of winding up in case of IBC. In IBC, after liquidation, there are three possibilities. Number one, dissolution. Second, closure of the liquidation. Closure in two scenarios, when it is sold as a going concern or scheme of compromise or arrangement has been sanctioned. Okay. That winding up process is there in Companies Act only. There is no concept of winding up in IBC. Okay, got it. 54 भी हो गया, 40, 54 के बाद 55, 55 से तो फिर अपना वो स्टार्ट हो जाएगा ना फास्ट ट्रैक वाला. नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द रेगुलेशंस, ठीक है, 54 हो ही गया हमारा. अच्छा चलिए, नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द मेजर liquidation regulations. Some of these we have already seen. Now regarding this 2A, 2A I think we have already seen, है ना. Regulation number 2A हमने cover कर लिया. Contribution liquidation cost. Any questions on regulation 2A? So it says the committee is not approving any resolution plan. Now they will make an estimate. They will make an estimate that what are the liquid assets and what is the estimated liquidation cost. Now, in case the liquidation cost is exceeding the liquid assets, then what it will do? The liquidator shall call upon the financial creditors, being financial institutions, to contribute the excess of the liquidation cost over the liquid assets of the corporate debtor in proportion to the financial debts owed to them by the corporate debtor. And this deposit has to be made within a period of 7 days from the liquidation commencement date. So the first thing the liquidator will ensure is that at least the liquidation cost shall be recovered, right? So this is the minimum. So suppose there are two financial institutions and they are having the amount of debt as 40 and 60, and suppose 10 is the shortfall. So then they will contribute in the ratio of 4:6. Now what is the surety? That this amount will be returned. So it will be considered as part of the liquidation cost to be paid in priority. And this amount has to be deposited in a designated escrow account to be opened and maintained in a scheduled bank within 7 days of passing of the liquidation order. Okay. And the amount contributed shall be repayable with interest at bank rates as part of the liquidation cost. Clear है ये वाला regulation? Regulation 2A? Yes, sir. Now compromise or arrangement. Now regarding this compromise or arrangement,
What is the period for this compromise or arrangement in liquidation? 90 days. 90 days. 90 days of the order of liquidation. And during compromise or arrangement also, this 29A person cannot be a party. He cannot be a proposer of the scheme. He cannot be a beneficiary of the scheme. He shall not be a party in any manner to such compromise or arrangement. Now suppose the COC made a recommendation. So in this case, the liquidator shall file the proposal of compromise or arrangement only in cases where such a recommendation has been made by the committee. Besides the liquidator, who can propose the scheme? The creditors, the shareholders. Provided further that the liquidator shall not file such proposal after expiry of 30 days from the liquidation commencement date. The time taken on compromise or arrangement not exceeding 90 days shall not be included in the liquidation period. Now, any cost. The question comes, who will bear the cost of this compromise or arrangement? If the scheme is sanctioned, then the CD will bear. If the scheme is not sanctioned, then the applicant will bear. Right? Eligibility for appointment as a liquidator, we have already seen. The main point here is that regarding the 10%. Okay. So if you are an employee or proprietor or partner of a legal or consulting firm that has or had any transaction with the corporate debtor contributing 10% or more of the gross turnover of such firm in the last 3 financial years, then you cannot become a liquidator. Okay. Other things are same as in case of a resolution professional. Besides that, a liquidator shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with the concerned corporate debtor or any of its stakeholders as soon as he becomes aware of it to the board and the adjudicating authority. ये वाला point क्या है? What is this point? Disclosure of existence of any pecuniary or personal relationship. The point here is there could be a situation where you can be appointed, but there is an additional onus of you on you of disclosing the relationship, pecuniary or personal relationship. Where it is given? ये कहां पर दिया हुआ है? It is given in IP regulations. So if you see the IP regulation, I will show you the IP regulations also. मैं आपको IP regulations दिखाता हूं जहां पर ये बात कही गई है. IP regulations एक मिनट. IP regulations आपके हैं. ये 651 तो मैंने बताऊं. ये कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होगा. सपोज योर ब्रदर इज अ शेयर होल्डर. आपकी वाइफ शेयर होल्डर है उस कंपनी में, तो आप अपॉइंट तो हो सकते हो, कोई बाहर तो है नहीं, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना है ये रिलेशनशिप. ये ये शेड्यूल पे आएगा आपको. हम्म ये एक बार पढ़ लेते हैं. आज ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है.
So let us read this point. क्या बोलता है? You should be independent and impartial. पॉइंट नंबर 8 पढ़ लीजिए एक बार जरा. पॉइंट Yes, नंबर 8. हाँ, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ. क्या कहते हैं इसमें पॉइंट नंबर 8 में? यस, पढ़िए जरा. an insolvency professional shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the stakeholders entitled to distribution under Section 53 or 178 of the Code, हम्म. and the हाँ. And the concerned corporate data. concerned corporate debtor as soon as he becomes aware of it by making a declaration of the same to the applicant, committee of creditors, and the person proposing appointment as applicable. पढ़िए पढ़िए आगे An पढ़िए. insolvency professional shall disclose as to whether he was an employee of or has been in the panel of any financial creditor of the corporate debtor to the committee of creditors and to the insolvency professional agency of which he is a professional member, and the agency shall publish such disclosures on its website. तो ये And नहीं है, यहाँ कोई बार नहीं है. If you are in a panel of a banker, right, and that banker is the financial creditor of the CD, then there is no bar as to your appointment, but you have to make a disclosure. That okay, this UCO bank is one of the financial creditor, but I am on the panel of the bank. Yes. so, if we are in the panel of the bank and if we are appointed, then we are disclosing it, but we can be appointed in that case or not? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपॉइंट हो सकते हैं. हाँ. Okay, sir. हाँ, बल्कि उसमें तो प्रेफरेंस मिलता है आपको. Okay, sir. An insolvency professional shall disclose its relationship, if any, with the corporate debtor, other professionals engaged by it, financial creditors, interim finance providers, and prospective resolution applicants to the insolvency professional agency of which he is a member within the time specified hereunder. तो यहाँ पर ये सारी रिलेशनशिप डिस्क्लोज करनी है. यस, पढ़ लीजिए एक बारी. Relationship of the insolvency professional with corporate debtor, disclosure to be made within 3 days of his appointment. Registered valuers, accountants, or legal professionals or other professionals appointed by him, disclosure to be made within uh, appointment of the हाँ, professionals. विद इन 3 days ऑफ द अपॉइंटमेंट. ठीक है. Days of तो the जिस जिसके साथ भी है ये सारा दिस डिस्क्लोजर हैज टू बी मेड विद इन 3 days. अच्छा, नेक्स्ट पढ़ लीजिए 8C. An insolvency professional shall ensure disclosure of the relationship, if any, of the other professionals engaged by it with itself, the corporate अब debtor, देखो, the financial एक तो ये creditor. कि ये इसकी रिलेशनशिप है. 8B में क्या है? आईपी रिलेटेड है. दूसरा क्या है? जो उसने प्रोफेशनल एंगेज किया वो रिलेटेड है. 8B और 8C में व्हाट इज द डिफरेंस? In 8B, IP is related with CD, professionals, FC, interim finance providers, and in 8C, that professional which was appointed by the IP, he is related. Okay. तो उसके ऊपर With भी उसमें लाइबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के ऊपर. An insolvency professional shall ensure disclosure of the relationship, if any, of the other professionals engaged by it with itself, the corporate data, फाइनेंशियल क्रेडिटर, इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर. ठीक है. और ये भी आपको 3 दिन के अंदर एंश्योर करना. और यहाँ रिलेशनशिप का मतलब क्या है ये भी दिया हुआ है. ये इंपॉर्टेंट है. फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 8B and C, relationship shall mean any one or more of the following 4 kinds of relationships at any time or during the 3 years preceding the appointment of other professionals. ठीक है. यहां पर भी पीरियड 3 years का है. एंड दिस इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप. एक बार पढ़ लीजिए कि व्हाट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप. where the insolvency professional or the other professional, as the case may be, has derived 5% or more of his or its gross revenue in a year from professional services to the related party. B. Where the insolvency professional or other professional, as the case may be, is a shareholder, director, key managerial personnel, or partner of the related party. C. Where a relative or spouse, parents, parents of spouse, sibling of self and spouse,
and children of the insolvency professional or the other professional, as the case may be, has a relationship of kind A or B with the related party D, where the insolvency professional or the other professional, as the case may be, is a partner or director of a company, firm, or LLP, such as an insolvency professional entity or registered valuer. The relationship of kind A, B, or C of every partner or director of such company, firm, or LLP with the related party. तो ये रिलेशनशिप अगर है तो आपको डिस्क्लोज करना है। बस थोड़ा सा और है, पढ़ लीजिए पूरा इसको। An insolvency professional shall ensure timely and correct disclosures by it and other professionals appointed by it, and shall provide a confirmation to the insolvency professional agency of which he is a professional member, to the effect that the appointment, if any, of every other professional has been made at arm's length relationship. An insolvency professional shall not influence the decision or the work of the committee of creditor or debtor or other stakeholders under the code, so as to make any undue or unlawful gains for itself or its related parties, or cause any undue preference for any other persons for undue or unlawful gains, and shall not adopt any illegal or improper means to achieve any malified objectives. हाँ, तो बेसिकली क्या है कि आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, आपको इम्पार्शियल रहना है। भाई आपने कोई प्रोफेशनल एंगेज करना है, ये नहीं कि आप अपने ब्रदर को ही एंगेज कर दो। अगर ब्रदर क्वालिफाइड है, वैसे तो वो रिलेटिव में ही बाहर हो जाएगा, है ना, लेकिन मतलब कहीं आप ब्रदर नहीं, कोई ऐसा रिलेशनशिप उसमें ले लो, ये सारे आ गए इसमें, है ना, फादर मदर ये सब सिबलिंग भी आ गए, सब सब चीजें आ गई इसमें। तो यहां पर क्या है कि यू हैव टू मेक डिस्क्लोजर्स ऑल्सो, डिस्क्लोजर भी करना है क्या रिलेशनशिप है। चलिए अब दोबारा से हम वहीं पर चलते हैं अपना, जहां पर हम थे, लिक्विडेशन रेगुलेशंस पर। यस, लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस। टू ए हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, लिक्विडेटर फीस, लिक्विडेटर फीस हमने देख लिया। लिक्विडेटर फीस पे क्या है, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच फीस कैन बी पेड। नंबर वन, फीस वाज डिसाइडेड बाय द सीओसी at the last stage. So when the COC took a decision to liquidate, they asked the RP what fees he will be charging if he is appointed as a liquidator. Second, if it is not decided at that time, then the consultation committee will fix. And in case it's neither decided by the COC nor by the consultation committee, then this is the rate chart as per which fees will be paid. For the period during compromise arrangement, he will be paid the same fees as he was being paid during his fees as RP. ठीक है, so this is the distribution. Sir, one thing I have to ask. हाँ, Sir, earlier the fees, the minimum fees paid to the IP was 1 lakh rupees. Now it has increased or something else, or that the amount remains as 1 lakh only? actually that is given in CIRP regulations. So let me show you CIRP regulations. So CIRP regulations contain the details regarding the fees. There is a schedule in CIRP regulations. So very good question, and I'll show you the regulations. This is the minimum fee structure. I hope it is visible. Is it visible? Yes. Yes. So this is in CIRP regulation schedule 2. So it is based on the amount of claims admitted per month. So I think you were referring to this 1 lakh. Yes, the minimum amount was 1 lakh earlier. So here also is the same, but people are charging less also. So there is no bar as such. So if somebody comes to you and you charge less, so then no action will be taken against you. People are charging even lower than this. Okay, sir. So this is the paying banks or also paying less amount. Is it not a professional ethics undercutting something?
We also no, have a code actually of conduct, right? Professional code of but that is there. But actually, they say they want by when they will ask for quotes from 2, 3 people. Suppose somebody is quoting less, so why they will not award to that person? Because all are equally qualified. Hmm. So minimum fixed fees shall be paid to the IRP or RP as the case may be for the period mentioned. This is based on the quantum of claims admitted. And this is not covered when you have already submitted an application for approval, then the fees will be lower. Second, when you have submitted the application to liquidate and when you have submitted the application to withdraw from this process under 12 or order for closure of the CIRP, whichever is lower. So in all these cases, fees will be lower than this. Then there is performance linked incentive for timely resolution and then the performance linked incentive for value maximization. So this is the way in which fees is decided. तो ये फीस वाला पार्ट। अभी हम लिक्विडेशन के रेगुलेशंस एक बार देख लेते हैं। लेट अस सी द रेगुलेशंस। ये हो गया। एनी एनी क्वेश्चन ऑन दिस चार्ट? इसको इस चार्ट पर कोई क्वेश्चन है क्या? सपोज यू रियलाइज द 5 crores इन द फर्स्ट 6 months, ठीक है? तो कैसे पेमेंट होगा आपको? फर्स्ट 6 months में आपने 5 crore रियलाइज कर लिया, तो आपको कितना फीस पेमेंट होगा? Sir, for on the first 1 crore, 5%, हम्म, and on the next 4 crores, 3.75%. हाँ। और ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा या इसमें भी आधा रियलाइजेशन पर मिलेगा, आधा डिस्ट्रीब्यूशन पर मिलेगा? Will be in the first one, and second amount distributed to stakeholders on the will be 2 point means if there is 5, then 2.5 here and 2.5 there, two राइट। times. Time अच्छा, of distribution. नाउ इन द सेकंड स्टेज यू रियलाइज अनदर 5 crores। आपने पहले 5 crore रियलाइज कर लिया। 5 crore पर आपको फर्स्ट करोड़ का तो 5% मिल गया। ऑन द बैलेंस 4 crore यू गॉट 3.75, राइट? नाउ यू रियलाइज अनदर 5 crores। तो अभी जो अनदर 5 crores है उस पर कैसे उसकी कैसे कैलकुलेशन होगी? सर ऑन द नेक्स्ट 40 crore वाला स्लैब आ जाएगा, फिर उसमें वहां से स्टार्ट होगा। हाँ, वो फिर क्या होगा आपका? ये नहीं कि भाई हर बार आप फर्स्ट करोड़ से शुरू कर दो, नहीं। फर्स्ट करोड़ एक ही बार के लिए है, उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट स्लैब में ही आओगे। फिर आपको जो बाकी बैलेंस है पूरा, उसके ऊपर आपको 3.75 ही मिलेगा। 3.75 का भी आधा, है ना? क्योंकि क्या बोलता है यहां, ये एक इसमें ये तो हम चलोगे क्लैरिफिकेशन। For the purpose of clause B, it is hereby clarified that where a liquidator realizes any amount but does not distribute the same, ऐसा भी हो सकता है ना कि चेंज हो गया लिक्विडेटर बीच में, इसीलिए रियलाइजेशन की फीस अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन की फीस अलग है। अच्छा, कैश एंड बैंक बैलेंस पर क्या रियलाइजेशन वाला अमाउंट मिलेगा? भाई कैश एंड बैंक बैलेंस भी तो होता है ना कंपनी में, तो क्या उस पर भी रियलाइजेशन आप चार्ज कर सकते हो? यस और नो? नो सर। नहीं, उस पर नहीं मिलेगा, वो तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, जैसे हाँ, वो एफडी। कैश है सर। हाँ, उस पर कुछ नहीं मिलना आपको, वो जो आप एसेट सेल करोगे उसी पर मिलेगा, ठीक है? और पॉइंट नंबर 4 है आपका, the liquidator shall be entitled to receive half of the fees payable on realization under sub-regulation 3 after such realized amount is distributed। ये भी हो गया। नाउ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या क्या रिपोर्ट्स आपको प्रिपेयर करनी है? एक तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एसेट मेमोरेंडम,
Asset memorandum is something similar to information memorandum. Then progress reports, quarterly progress reports are to be made, sale reports, minutes of consultation with stakeholders, and final report prior to dissolution, जो हमने फॉर्म एच था, ठीक है, फॉर्म एच के साथ में फाइनल रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. और the liquidator shall preserve a physical as well as an electronic copy of the reports and minutes referred to in sub regulation 1 for 8 years after the dissolution of the corporate debtor. ठीक है. अब यहां पर देखिए दोनों चीजों में फर्क है. ये जो रिकॉर्ड्स है ना, इसकी कॉपी आपको 8 years तक रखनी है, यहां 3 years नहीं है. जैसे बुक्स एंड रिकॉर्ड्स में है ना कि भाई 3 years तक फिजिकल कॉपी और 8 years तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. ये वाली जो कॉपीज है ऊपर वाली, ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये 8 साल तक रखनी है आपको. इसमें 3 years वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, क्लियर है बात. सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस, द लिक्विडेटर shall make the reports and minutes referred to sub regulation 1 available to a stakeholder in either electronic or physical receipt. इसमें से कोई अगर मांगेगा तो उनको दे सकते हैं किसी भी स्टेक होल्डर को. on an application in writing, cost of making the application, and an undertaking regarding confidentiality. Registers and books of account. If books are not complete, then what is the period? With all convenient speed. ऐसा कोई Yes, लिखा sir. नहीं है 60 days या क्या होगा. As soon as the order for liquidation is passed. And these are the books to be maintained. Cash book, ledger, bank ledger. ठीक है, ये सारा आपको करना है. And shall preserve for a period of 8 years. ये जो बुक्स है ये भी आपको 8 years तक प्रिजर्व करनी है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की जहां तक बात होती है ना, आपको देखना है, एक तो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स आपको 8 साल तक रखनी है. इसी तरह से ये वाली जो बुक्स है ये भी आपको 8 साल तक रखनी है. ठीक है, the registers and books under sub regulation 2 may be maintained in the forms indicated in schedule 3 में फॉर्म दे रखा है. ठीक है, and it may be modified also. The liquidator shall keep receipts for all payments made or expenses incurred by him. ठीक. Now appointment of professionals. पॉइंट नंबर 7. तो एक बार पढ़ लीजिए काजल जी, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स क्या बोलता है. Yes, sir. हम्म. A liquidator may appoint professionals to assist him in the discharge of his duties, obligations, and functions for a reasonable remuneration, and such remuneration shall form part of the liquidation cost. हम्म. The liquidator shall not appoint a professional under sub-regulation 1 who is his relative, is a related party, or of the corporate debtor, or has served as an auditor to the corporate debtor in the 5 years preceding the liquidation commencement हम्म. date. देखो A इसमें professional क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ऑडिटर, वेदर ऑडिटर इज डिफाइंड. द आंसर इज यस. ऑडिटर डिफाइंड है आपका. ऑडिटर कौन है, बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहा है. सेक्शन 5 में डिफाइंड है ऑडिटर. सेक्शन 5 में ही होगा. सेक्शन 5 सब सेक्शन 2. ऑडिटर मींस ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड टू प्रैक्टिस एज सच बाय आईसीआई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए. A professional, a professional appointed or proposed to be appointed under sub-regulation 1 shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the stakeholders or the concerned corporate debtor as soon as he becomes aware of it to the liquidator. ठीक है, अब इसके साथ में हमने वो वाला डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप भी पढ़ लिया है ना, Yes, तो yes. क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट, कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स. The नेक्स्ट पॉइंट. stakeholders हाँ. The stakeholders consulted under Section 35 Subclause 2 shall extend all assistance and cooperation to the liquidator to complete the liquidation of the corporate debtor. The liquidator shall maintain the particulars of any consultation with the stakeholders made under this regulation as specified in Form A of Schedule 2. हाँ, तो फॉर्म ए अगर हम देखें तो ये फॉर्म ए है हमारा, ये फॉर्म ए आ गया परफॉर्मा.
तो परफॉर्मा में क्या, ये पूरी डिटेल्स है, क्या क्या दिया, है ना, पैरा ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग वेयर द सेम वाज डिस्कस्ड, ये सारा फॉर्म ए है। तो फॉर्म ए के अंदर इसको रिकॉर्ड रखना है, कंसल्टेशन। यहाँ पर थे। देन पर्सनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन, सो लिक्विडेटर में मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो 19(2) में एप्लीकेशन लगेगी। ठीक है। डिस्क्लेमर ऑफ ओनर्स प्रॉपर्टी, ये भी हमने कर लिया कि नहीं किया, कर लिया था सर। है ना, कर लिया था हमने डिस्कस। ठीक है। एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, पब्लिक अनाउंसमेंट बाय लिक्विडेटर इन फॉर्म बी। ठीक है, विद इन 5 days। और पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या होगा, ये क्लेम्स वगैरह इनवाइट करेंगे। उसके बाद प्रोसेस ईमेल आईडी, ये देख लेते हैं। The liquidator shall operate the process email account handed over to him by the RP। आरपी ने भी अपना प्रोसेस ईमेल आईडी अकाउंट बना रखा होगा ना, तो ये इसको हैंड ओवर कर देगा। एंड इन द इवेंट ऑफ हिज रिप्लेसमेंट द क्रेडेंशियल्स ऑफ सच ईमेल आईडी शैल बी हैंडेड ओवर टू द न्यू लिक्विडेटर, तो यूजर आईडी पासवर्ड नए लिक्विडेटर को दे देगा। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपको बनानी है विद इन 75 days फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। और उसके अंदर क्या क्या होना है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, estimate of its assets and liabilities as on the liquidation commencement date based on the books of the corporate debtor। ठीक है। अगर उसको लगता है बुक्स रिलायबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, he shall also provide such estimates based on reliable records and data otherwise available to him। देखो 75 days में बनानी है, तो 75 days तक क्या होगा, क्लेम्स भी आ गए होंगे, उनका प्रूफ भी आ गया होगा, उसने वेरीफाई भी कर लिया होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि बुक्स में क्या है और क्लेम्स में क्या है। अगर क्लेम्स कुछ अलग ही आ रहे हैं, बुक्स में कुछ अलग ही है, तो पता चल जाएगा भाई बुक्स तो बेकार है, तो फिर इस बेसिस पे वो बना देगा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। बनाना क्या है बेसिकली, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये भी बताना है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कि भाई उसको कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, वेदर ही इंटेंड्स टू मेक एनी फर्दर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर रिलेटिंग टू द प्रमोशन, फॉर्मेशन और फेलियर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस देयरऑफ, or proposed plan of action for carrying out the liquidation, including the timeline within which he proposes to carry it out and the estimated liquidation cost। तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में ये सब बातें वो बता देंगे। अच्छा, अर्ली डिसोल्यूशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब उसने पहली बात कि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर अर्ली डिसोल्यूशन। अर्ली डिसोल्यूशन की क्या कंडीशंस हैं, पहला, the realizable properties of the corporate debtor are insufficient to cover the cost of the liquidation process। अगर उसको लगता है कि भाई लिक्विडेशन प्रोसेस की कॉस्ट भी नहीं पूरी होगी, और सेकंड क्या है कि भाई कोई गड़बड़ भी नहीं है कंपनी में, the affairs of the corporate debtor do not require any further investigation, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। he shall consult the consultation committee and if it advises for early dissolution he may apply along with a detailed report incorporating the views of the consultation committee to the adjudicating authority for early dissolution of the corporate debtor and for necessary direction in respect of such dissolution। ठीक है। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है बेसिकली क्वार्टरली, और क्वार्टरली है विद इन 15 days आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच इज अपॉइंटेड। बाकी इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट विद इन 15 days आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर, और अगर मान लीजिए बीच में ही छुट्टी हो गई इसकी, तो जब जिस डेट को व्हेन ही रेमिटेड द ऑफिस, व्हेन ही डेबिटेड द ऑफिस, उसके 15 days। ठीक है। और इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या लिखना है, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में, अपॉइंटमेंट, टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सेसेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग प्रोग्रेस इन लिक्विडेशन इंक्लूडिंग सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिट स्टेक होल्डर्स, डिटेल्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट रिमेन टू बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन मेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब उस क्वार्टर में जो भी प्रोग्रेस हुई ये सारा इसको देना है। Details of fees or remuneration, including the fees due to and received by the liquidator, together with the description of the activities carried out by him। ठीक है। Remuneration or fees paid to professionals,
अब आप देखिए दोनों में फर्क है। लिक्विडेटर के बारे में क्या लिखना है? ड्यू टू एंड रिसीव्ड, ड्यू भी लिखना है और रिसीव्ड भी लिखना है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स है उनके में क्या लिखना है? रिमनेशन और फीस पेड टू प्रोफेशनल्स, वहां ड्यू नहीं लिखना। ठीक है। अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर वेदर पेड और नॉट। डेवलपमेंट्स इन एनी मटेरियल लिटिगेशन बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, बेसिकली उस क्वार्टर में क्या क्या प्रोग्रेस हुई ये सारी चीजें आपको देनी है। ठीक है। A progress report shall enclose an account maintained by the liquidator showing his receipts and payments during the quarter and the cumulative amount of his receipts and payments since the liquidation commencement date. तो ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं और क्यूमुलेटिव। A progress report shall enclose a statement indicating any material change in expected realization of any property proposed to be sold along with the basis for such change। मतलब ये है कि जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में उसने बता दिया था कि भाई एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन क्या होगा। अगर वो उसको लगता है कि ये चेंज हो गया तो वो बता देगा, इसमें स्टेटमेंट लगा देगा अलॉन्ग विद रीजंस। ठीक है। और फोर्थ क्वार्टर में क्या करना है आपको? ऑडिटेड भी लगाने हैं। द प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द फोर्थ क्वार्टर shall enclose audited accounts of the liquidators receipts and payments for the financial। ठीक है। अगर मान लीजिए लिक्विडेटर बीच में ही हटा देते हैं उसको तो वो अपने पीरियड का ऑडिट करवा के जाएगा। ठीक है। Provided that in case an insolvency professional ceases to act as liquidator, the audited accounts of his receipts and payments for that part of the financial year during which he has acted as liquidator shall be enclosed with the progress report to be filed after cessation of his appointment। ये एग्जांपल दे रखा है। यस प्लीज। हाँ नरेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही है। क्या कह रहे हैं आप? नाउ बढ़िया सर, रिगार्डिंग, बढ़िया बढ़िया। हाँ रिगार्डिंग क्लेम्स, सबमिशन ऑफ क्लेम्स। तो सबमिशन ऑफ क्लेम्स में कोई खास बात नहीं है। क्लेम्स बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉर्म सी, क्लेम्स बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर्म डी, क्लेम्स बाय वर्कमैन फॉर्म ई और न्यूमरस वर्कमैन फॉर्म एफ, क्लेम्स बाय अदर स्टेक होल्डर्स फॉर्म जी। ठीक है। प्रूविंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट ये हमने देख ही लिया है ना, 21 ने हमने पढ़ ही लिया, अभी भी पढ़ा शुरू में। प्रोडक्शन ऑफ बिल्स, सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम्स, कॉस्ट ऑफ प्रूफ वगैरह, इतने को खास बात इसमें नहीं है, जैसा सीआईआरपी में है सेम ही। पीरियोडिकल पेमेंट्स, डेट्स पेबल एट फ्यूचर टाइम। ये डेट्स पेबल एट फ्यूचर टाइम में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कोई ऐसा डेट हो सकता है ना विच इज पेबल 5 years हेंस। ठीक है। बट अभी तो लिक्विडेशन हो रहा है, अभी तो आपको आज की डेट में कैलकुलेशन करनी है ना। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है? एक्स डिवाइडेड बाई 1 + r⁻⁴n। ठीक है। एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं क्योंकि समझ में भी आना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करके इसकी देख लेते हैं कि होती कैसे है कैलकुलेशन। अब जैसे मान लीजिए जो लोन अमाउंट है पेबल आफ्टर 5 years, अब इसका है 10 lakhs। हमने 5 लाख बाद, 5 साल बाद कोई देना है अमाउंट। तो अब ये तो नहीं कह सकते ना 5 साल बाद देंगे, अभी तो लिक्विडेशन आज हो रहा है तो आज ही देना पड़ेगा इसको। तो इसकी कैलकुलेशन क्या है? एक्स, एक्स क्या है हमारा? 10 lakhs। ठीक है। 10 / 1 प्लस, आप इसमें परसेंटेज ले सकते हैं। वो कहता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला परसेंटेज है वो ले लो, 0.04 ले लो, मतलब सपोज इट इज, विजिबल सर। हाँ ये ले लिया। और उसके बाद में रेज टू द पावर, तो रेज टू द पावर के लिए क्या लगाएंगे हम? You रेज टू could द पावर share, के लिए you could share Excel sheet, it would be great. है। Excel sheet we are not able to see. अच्छा अच्छा, एक्सेल शीट एक मिनट में लगा, ये है एक्सेल शीट। आई होप नाउ इट इज विजिबल, है ना। यस। तो इसमें ये शिफ्ट के साथ
ये 6 के ऊपर जो साइन होता है ना, ये लगाएंगे, ये लगा करके, और सपोज इट इज 5 years, तो ये ऐसे कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। और 10, एक मिनट, 10 जो है ये हमारा इसके साथ प्लस लगा, तो ये आ जाएगी कैलकुलेशन। ये दिखाई दे रहा है आपको? हमने क्या किया, 5 years के बाद में 10 होना है, अभी 10 की हमें आज की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, 10 डिवाइडेड बाई 1 + r, आर आपका 4% है सपोज, तो 0.04, और रेज टू द पावर n, n मतलब जो हमारा पीरियड है, पीरियड हमारा था 5 years, तो इस 6 के ऊपर एक साइन होता है ना, एरो सा बना होता है, अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो क्या कहते हैं इसको, लैम्डा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये है, ये बन जाएगा आपको आज की डेट में इतने पैसे देने। ठीक है, ये है। डेट्स पेबल एट फ्यूचर टाइम। सदी होगा पहले, चलिए ये भी हो गया, और हम दोबारा से देखें। इस पे नहीं थे, इस पे थे। ये था, ये तो हो गया। एक द लिक्विडेशन प्रोसेस, लिक्विडेशन रेगुलेशंस। बस 5 मिनट और कर लेते हैं, थोड़ा लेट भी शुरू किया था हमने। ये हो ही गया हमारा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो गया, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया, क्लेम्स हो गए, क्लेम्स के बाद में ये सारा हो गया हमारा। डेट्स पेबल एट फ्यूचर टाइम कैलकुलेशन हमने देख लिया, म्यूचुअल क्रेडिट सेट ऑफ, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, ट्रांसफर ऑफ डेट ड्यू टू क्रेडिटर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स में क्या क्या बनानी है आपको देख लीजिए एक बार। The liquidator shall prepare a list of stakeholders category wise on the basis of proofs of claim submitted। अब आप ये बताओ कि ये जो स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी आएंगे या नहीं आएंगे? यस आएंगे। यस, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि स्टेक होल्डर की डेफिनेशन दे रखी है आपको, है ना? तो स्टेक होल्डर वो है जिसको 53 में मिलना है पैसा, और 53 में तो शेयर होल्डर्स को भी मिलना है ना? द लिक्विडिटी शेल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स ऑफ क्लेम सबमिटेड एंड एक्सेप्टेड अंडर दिस रेगुलेशंस with the amount of claim admitted if applicable, the extent to which the debt or dues are secured or unsecured if applicable, details of the stakeholders, and the proofs admitted or rejected in part and the proofs wholly rejected। ठीक, और कब फाइल करनी है आपको? The liquidator shall file the list of stakeholders with the adjudicating authority within 45 days from the last date for receipt of claims। मतलब 30 डेज तो होती है डेट ऑफ लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स, उसके 45 डेज के अंदर आपको भरनी है। 30 डेज आपके पास वेरिफिकेशन के लिए है, तो इसलिए आपको 15 दिन और मिल गए फॉर फाइलिंग दिस लिस्ट ऑफ स्टेकहोल्डर। और अगर कोई एरर है तो नेचुरली उसको मॉडिफाई कर दे, और अगर कोई अपील में चला गया, किसी का क्लेम रिजेक्ट हो गया, है ना, तो ये 42 उसका उसकी बात कर रहा है कि अगर किसी का क्लेम रिजेक्ट हो गया, बाद में वो एडमिट हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू, तो फिर उसको मॉडिफाई कर दे। ये जो लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स है, एज मॉडिफाइड इट शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द पर्सन्स हु सबमिटेड proofs of claim, available for inspection by members partners, displayed on the website, filed on the electronic platform। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी हमने कर लिया था, है ना जी? काजल जी, डिस्कस किया था हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी।
सर एज सच तो शायद नहीं डिस्कस किया था इसको। नहीं किया था, ओके ठीक है। फिर अगली क्लास में कर लेते हैं, अगले में ये पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यस सर। नेक्स्ट यस क्लास में सर। कर लेते हैं, अब थोड़ा लेट हो जाएगा नहीं तो, यस अगर सर। आप डिस्कस करने लगे ना। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का में दो बातें मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ। एक तो क्या है कि इसमें ना एक्सटेंडेड रोल है स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी का, हर पॉइंट पर इसको कंसल्ट करना है आपको, कंसल्टेशन कमेटी को। और this consultation committee has to be made within a period of 60 days from the liquidation commencement date. और फर्स्ट मीटिंग स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी की होनी है विद इन 7 days। तो जब तक ये कंसल्टेशन कमेटी नहीं बनती तो जो सीओसी है दैट विल एक्ट एज स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। और ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है क्या, रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, सेल अंडर रेगुलेशन 32, फीस ऑफ द लिक्विडेटर, वैल्यूएशन, मैनर इन विच पीयूएफई ट्रांजेक्शंस and what will be the treatment, a review of marketing strategy, continuation or institution of any suits, extension of payment of balance sale consideration। तो ये सारी की सारी बातें आपको डिस्कस करनी है किससे, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। और एक और बात है, इसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, कौन नहीं आएगा इसमें, एक तो जो मैनेजमेंट है, जो प्रोमोटर्स हैं वो नहीं आएंगे, और दूसरा अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर या उसकी रिलेटेड पार्टी है वो नहीं आएगा, ठीक है। ए फाइनेंशियल क्रेडिटर और इज रिप्रेजेंटेटिव इफ इज ए रिलेटेड पार्टी, तो रिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं आएंगे और पार्टनर्स मैनेजमेंट डायरेक्टर्स नहीं आएंगे। बट सपोज देयर इज अ शेयर होल्डर एंड इज नॉट ए प्रोमोटर और डायरेक्टर, देन ही विल कम, ठीक है। और इसमें वो 10% वाला फंडा नहीं है, सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। एंड दे में रिप्लेस द लिक्विडेटर ऑल्सो विद 66% मेजोरिटी, इसके पास पावर है, ठीक है। चलिए इतना ही करते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिटेल। ओके जी, गुड नाइट। थैंक यू सर।